Hello and welcome you all. Now let's continue our discussion. In the last video we have completed up to question number 70. So in this video we will start from question number 71. Question number 71. The Lorentz force law states, देखो Lorentz force law basically states about the force on a charged particle due to the electric field and magnetic field. And we know force on a charged particle due to electric field is QE, and force on that charged particle due to magnetic field is Q V cross B. So the total force on the charged particle due to electric field and magnetic field is Fe plus Fe, and that is equal to Q A plus V cross B. So Lorentz force law is F equal to Q E plus V cross B. So your correct option is option A. Question number 72. Which one of the following figures approximately represent the vector field? देखो let the given vector field be A and it is equal to minus y I cap plus x j cap. अच्छा देखो ये प्लस एक्स जे कैप है और क्वेश्चन में वाई जे कैप लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट कर देना। तो देखो जैसे कि दो टर्म है, तो क्या करोगे, हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को ड्रॉ करते हैं, फिर सेकंड टर्म को ड्रॉ करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे कि फर्स्ट टर्म को कैसे ऐड करेंगे, लेट दिस फर्स्ट टर्म बी बी वेक्टर, हाँ, एंड इट इज माइनस वाई आई कैप। तो देखो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरिंग अलोंग वाई डायरेक्शन एंड इट्स direction is along minus I cap or minus x direction. So when we draw it, let this is be our I cap and this is minus I cap direction. देखो जैसे कि y की हम जीरो से अपवर्ड मूव करेंगे, when we move upward, देखो value of y will change, so that magnitude of this vector will change. And what we know, when we draw a arrow sign, in this arrow sign this length represent the magnitude, this length represent the magnitude of the vector, and this cap sign represent direction. So when we draw this vector in the positive y axis, so देखो जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, देखो जैसे कि हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, y में मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो देखो जैसे कि हम यहाँ वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, तो इस साइड ऐसे कुछ आएगा कि ये लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन माइनस आएगा। सिमिलरली व्हेन वी ड्रॉ दिस वेक्टर इन दिस पॉइंट 2, इट विल बी, देखो उसका लेंथ ये पहला वेक्टर से ज़्यादा होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ 2 है। तो सिमिलरली व्हेन यू ड्रॉ इट इन पॉइंट 3, इट विल बी लाइक दिस, ओके। एंड व्हेन यू ड्रॉ दिस वेक्टर इन द नेगेटिव वाई एक्सिस, देखो नेगेटिव वाई एक्सिस में क्या होगा कि y की वैल्यू अभी नेगेटिव है, नेगेटिव और ये एक नेगेटिव है, तो फाइनली वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। सो फॉर 1 इट इज, एंड फॉर 2 and for 3 it is like this. Similarly you can draw for x j cap, or let that be b dash vector and that is x j cap. तो देखो ये वेक्टर में क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो x पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्शन क्या है, j cap. So when we draw this vector, देखो जैसे कि ये 1 पॉइंट ले लो, ये 2, ये 3, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ ये 1, ये 2, ये 3। सिमिलरली देखो जैसे कि हम नेगेटिव एक्सिस पे आ जाएंगे, x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जे कैप की डायरेक्शन चेंज, ये वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो माइनस जे कैप की तरफ आ जाएगा। तो जैसे कि ये तो अभी क्या करोगे, पूरा दो फिगर को ऐड कर लो, एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल
जैसे कि ये अभी देखो ऑप्शन के साथ मैच कर लो। सो एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देखो जो ये वेक्टर है ना, ए वेक्टर माइनस वाई आई कैफ प्लस एक्स जे कैफ, अगर तुमने इसका कॉल कैलकुलेट करोगे ना तुम्हें नॉन जीरो मिलेगा। कॉल ए इक्वल टू नॉन जीरो। ओके, तो देखो अगर कॉल नॉन जीरो है तो ये क्या हो गया, ये रोटेशनल वेक्टर हो गया, रोटेशनल वेक्टर। और देखो वो फिगर से भी सेटिस्फाई हो रहा है कि इट इज ए रोटेशनल वेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 73। Two springs of spring constant K1 and K2 are connected in series with one end fixed such that they hang vertically. To the other end, an object of mass m is attached. The angular frequency of oscillation of small amplitude about the mean position is. देखो, two springs are given and they are hanging vertically with an object of mass m attached to the second spring, and in this system we have to define the angular frequency. Angular frequency of the system. अब देखो हमें क्या पता है कि फॉर ए स्प्रिंग मास सिस्टम एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट अंडर k by m, where k is the equivalent spring constant for this system. So to find omega for this system we have to define equivalent spring constant of this system, and here the springs are in series connection. They are in series connection, so the equivalent spring constant is 1 by ks equal to 1 by k1 plus 1 by k2. So ks is k1 k2 by k1 plus k2. Now we have equivalent spring constant, so the angular frequency of the system is k1 k2 by k1 plus k2 into square root. Just put the value of ks in this angular frequency formula. Okay, so this is the angular frequency for the given system, square root under k1 k2 divided by k1 plus k2 into m. So your correct option is option C. देखो ये सिचुएशन में क्या है कि स्प्रिंग्स आर इन सीरीज कनेक्शन, सो इसके जो पैरेलल कनेक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला है ना फॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो भी याद रख लेना। व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कनेक्शन, so at that time the equivalent spring constant equals to k1 plus k2. Question number 74. A body of mass m is suspended from a weighing balance which is in turn hang from the roof of a rocket moving vertically upwards with constant acceleration m. Assuming the constant acceleration due to gravity due to earth, find the weight of the body as measured by the balance. देखो this situation is given, an object of mass m is hanging from the weighing balance, and this weighing balance is hanging from the roof of the rocket. This rocket is moving upward with constant acceleration a, and we have to find the weight of this object with respect to this balance. देखो जैसे कि ये balance is hanged from the rocket, and a rocket is moving upward with constant acceleration, and this rocket is a accelerated frame, and we know that accelerated frames are non-inertial frame, and for a non-inertial frame there will be pseudo force, and for the given system pseudo force will be ma, and this pseudo force
should be opposite in direction to the non-inertial frame. Non-inertial frame. So that will be the pseudo force on that object of mass m, that is ma. So when we measure the weight of this object with respect to this weighing balance, it will give us mg plus ma, that is mg plus a. So your correct option is option D. Question number 75. A mass of 5 kg is suspended from a vertical massless spring of spring constant 500 Newton per meter. The mass is displaced downward by 0.03 meter and released. The frequency of oscillation of the mass is. देखो ये सिस्टम गिवन है कि a mass is attached to a spring, and now we have to find the frequency of the oscillation when it is displaced from its mean position. Okay, so here x is 0.03 मीटर. देखो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो देखो जैसे कि यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, सो फ्रॉम यूजिंग दिस k and m we can calculate the angular frequency, and we know angular frequency is given by square root under k by m. So put the value of k and m 500 by 5 and it is equal to 10. देखो ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, तो लेकिन इन क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, एंड वी नो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ. सो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज 10 बाई 2 पाई एंड इट इज 5 बाई पाई. So frequency of the oscillation is 5 by pi. So and your correct option is option C. Question number 76. The dimension of surface tension is. We have to find the dimension for surface tension, and surface tension is defined as force per unit length, and write down the dimension of force and dimension of length. Dimension of force is m1 l1 t minus 2, and dimension of length is l1. So dimension of surface tension will be m1 t to the power minus 2. So your correct option is option D. Question number 77. Which one of the following correctly describes Bernoulli's theorem for incompressible fluids? देखो Bernoulli's theorem for incompressible fluid is this: P plus rho gh plus half rho v square equal to constant. देखो सारे ऑप्शन चेंज करो, बस ये इक्वेशन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, तो बस उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो. जैसे कि ऑप्शन में चेक करो कि सारे टर्म में क्या है कि रो जी डिवाइड बाय, तो डिवाइड ऑल दिस टर्म्स बाय रो जी. सो पी बाई रो जी प्लस एच प्लस 1 by 2 v square by g इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, और देखो अभी ऑप्शन चेक कर लो, एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, p by rho g plus h plus v square by 2g equal to constant. So this is the Bernoulli's theorem for incompressible liquid. Question number 78. The position coordinates of an object of mass m are given by x, y and z. The z component of angular momentum is given by. देखो position coordinates x, y and z are given. Now we have to find the z component of angular momentum, and angular momentum is defined as cross product of position vector and momentum operator, that is r cross p, and we have to calculate the z component only. So write it in determinate form: I cap
j cap k cap x y z p x p y p z। देखो हमें सिर्फ z कंपोनेंट चाहिए ना, तो आई एम राइटिंग ओनली द z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड दैट इज x py minus y px। okay, so देखो x and y coordinates are known to us, we have to calculate y component of momentum and x component of momentum, and we know momentum is defined as mass into velocity, that is m vx I cap plus vy j cap plus vj k cap। so x component of momentum is mvx and y component of momentum is mvy। now we have to find x component of velocity and y component of velocity। तो देखो x component of velocity vx, it is given by dx by dt, and position coordinate x is known to us and x is cos omega t, so it is d by dt of cos omega t, so it is minus omega sin omega t, so our vx is minus omega sin omega t। similarly calculate vy, that is dy by dt, and y is sin omega t, and that is omega cos omega t। okay, so x component of momentum is minus m omega sin omega t, and y component of momentum is m omega cos omega t। now z component of angular momentum x into py, x is cos omega t, py that is m omega cos omega t, minus y px minus y is sin omega t, px is minus m omega sin omega t, so it is equal to m omega cos square omega t plus sin square omega t, and then m omega, because cos square theta plus sin square theta is 1, so z component of angular momentum is m omega, and your correct option is option B। question number 79, a gas is in equilibrium at temperature T and volume V. It expands to a volume V dash. First case, the expansion is adiabatic and reversible. The final temperature is T1 and that is less than T. Second case, the expansion is adiabatic and irreversible. At the end of the process, if we wait long enough, the gas equilibrates and attains a temperature T2. Then देखो initially gas is in equilibrium at temperature T and volume V. Now this gas is expanded to volume V dash. First case the expansion is adiabatic and reversible, and the second case expansion is adiabatic and irreversible. And we know now adiabatic irreversible process is a isoentropic process, that is change in entropy is 0 here, and adiabatic irreversible process, yes, the entropy increases, that is change in entropy is greater than 0 or positive. And in this question it is given that in the first case the temperature is changing from T to T1 and T1 is less than T, and in this second case the temperature is changing from T to T2. Now we know that if we compare the temperature T1 and T2, T1 is from adiabatic reversible expansion and T2 is from adiabatic irreversible expansion. We know that T1 is less than T2, that is the temperature after the adiabatic reversible expansion is less than the temperature
after the adiabatic irreversible expansion. This can be proved from the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Dynamics. ओके तो देखो ये तो हमें पता है कि T1 इज लेस देन T2 एंड क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है कि इफ वी वेट लॉन्ग एनफ द गैस इक्विलिब्रेट्स एंड अटेन्स ए टेम्परेचर T2. सो देखो तो फाइनली सिस्टम का टेम्परेचर जो रेंज पूछ रहे हैं वो क्या क्या हो जाएगा कि T1 लेस देन T2 लेस देन इक्वल टू T. So this will be the range of the temperature of the system. So your correct option is option B. Question number 80. The number of photons emitted per second by a light emitting diode of 60% efficiency and 1 watt power consumption is. देखो we have to calculate the number of photons. So फॉर ए लाइट एमिटिंग डायोड. देखो ये जो गिवन है एफिशिएंसी और पावर. देखो पावर 1 वाट मीन्स हाउ पावर इज डिफाइंड. ठीक है एनर्जी पर यूनिट टाइम. सो एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड विल बी 1 जूल. नाउ देखो ये जो एफिशिएंसी है ये एफिशिएंसी क्या बता रहा है कि एफिशिएंसी 60% मीन्स एनर्जी released in the form of light. देखो it is a light emitting diode. So 60% efficiency means how much of energy is released in the form of light, and that is equal to 60% of 1 joule. That is 60 by 100 into 1. That is 3 by 5 joule. So per second this much of एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट. देखो ये जो लाइट रिलीज हो रहा है उसका वेवलेंथ गिवन है 6369 एंगस्ट्रॉम. तो देखो पर सेकेंड पे इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है एंड एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज h न्यू और दिस कैन बी रिटन एज hc by lambda wavelength of the light. Now total energy, this total energy 3 by 5 joule will be equal to n times energy of 1 photon. देखो जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है वो किससे टोटल फोटोन की एनर्जी की वजह से. सो नंबर ऑफ फोटोन्स n इक्वल टू 3 by 5 जूल by energy of 1 photon. Now 3 by 5 energy of photon hc by lambda. So देखो now put the value of lambda and hc. देखो ये 3 by 5 जूल है ना कि देखो ये 3 by 5 जूल है. वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 6369 आर्मस्ट्रॉन्ग. वैल्यू ऑफ HC 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. देखो ये वैल्यू याद रख लेना, ये वैल्यू याद रख लेना. जैसे कि HC इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. ओके देखो यहाँ जूल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो. जैसे कि 3 by 5 जूल इंटू 6369 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10 to the power minus 10 मीटर. नाउ 1240 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल इंटू नैनोमीटर 10 to the power minus 9 मीटर. तो ये भी याद रख लेना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल. देखो ये सारे एनर्जी यूनिट कन्वर्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रख लेना. तो भी कैलकुलेट कर लो. देखो ये कुछ ऐसा आएगा कि अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 to the power 80 नंबर्स ऑफ फोटोन. देखो एक्चुअली ऑप्शन मैच करो, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है. जो ऑप्शन डी में गिवन है ना 2 इंटू 10 to the power 28 तो आंसर लेकिन ये होगा कि 2 इंटू 10 to the power 18 नंबर्स ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 81. The function f of x is continuous at x equal to 1 if alpha equals to.
This function is given and we have to find value of alpha for which the function is continuous at x equal to 1. देखो क्या कंडीशन हमें पता है कि व्हाट ए फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1. कि फर्स्ट कंडीशन इज दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन शुड एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1. दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंस माइनस f of x इक्वल टू right hand limit. That is for the function to be continuous, limiting value of that function should exist at that point x equal to 1. Now second condition is that the functional value at that point x equal to 1 should equal to the limiting value, equal to the limiting value. Both these conditions should be satisfied by the function to be continuous at that point. So let us check. तो जैसे कि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, तो क्या हो जाएगा वो लिमिटिंग वैल्यू कि लिमिट f of x x square minus 2, तो minus 2 will be minus 1 and limit x tends to right hand limit alpha into 1 minus 1 alpha minus 1. So to be continuous this value should be equal. So alpha minus 1 equal to minus 1 or alpha equal to 1 minus 1, that is alpha equal to 0. So for alpha equal to 0, this function is continuous at x equal to 1. So your correct option is B. Question number 82. The vector is an eigenvector of the matrix with an eigenvalue. Matrix A and vector x are given. Now we have to find the eigenvalue lambda for which this vector is an eigenvector for matrix A. And from eigenvalue equation we know that Ax equal to lambda x. Now A 1 minus 2 3 minus 2 3 1 3 1 minus 2. Eigenvector x 1 1 1 equal to lambda 1 1 1. So this matrix A is a 3 cross 3 matrix and vector Ax is a 3 cross 1 matrix. So when we multiply them we will get 3 cross 1 matrix. So multiply it 1 minus 2 3, so it is 2 minus 2 3 1, it is 2 again 3 plus 1 4 minus 2, so it is 3 cross 1. Now lambda into 1 1 1. So for lambda equal to 2, this vector x is an eigenvector for matrix A. Now comparing both the sides, you can calculate lambda. So your correct option is option C, lambda equal to 2. Question number 83. A is a 3 cross 3 matrix with eigenvalues 1 minus 2 3. The eigenvalues of the matrix A square are given that A is a 3 cross 3 matrix and its eigenvalues are 1 minus 2 and 3. Now we have to find eigenvalues for A square, and we know that eigenvalues for A square will be lambda 1 square, lambda 2 square and lambda 3 square. So eigenvalues are 1 4 9. So your correct option is option B. Question number 84. The tangent line to the curve y equal to exponential x square at x equal to 0 has a slope.
देखो we have to find the slope and slope is generally defined as dy by dx. So it is 2x x exponential x square. Now we have to find that slope at x equal to 0. So put the value of x, so slope is equal to 0. So your correct option is option A. Question number 85. The the direction of motion of an electromagnetic wave is given by direction of electromagnetic wave, and it is generally denoted by k cap. That is the propagation vector. And we know in an electromagnetic wave, all these three vectors, propagation vector perpendicular to electric field, and electric field perpendicular to magnetic field, and also propagation vector perpendicular to magnetic field. So all these three vectors are perpendicular to each other in electromagnetic wave, and their electric field is given by B vector cross k cap C, and magnetic field is given by k cap cross E vector by C, and direction of propagation vector is given by E cross B. So you should remember all these three relation, and here direction of electromagnetic wave is E cap cross B cap. So your correct option is option B.